Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Professor Mazhar, your physics teacher. Today we are going to discuss step self-assessment test for MDCAT physics. Let us move to the board. Dear students, first question of this test is question number 1. A wire of resistance R is cut into 3 equal parts and these parts are bundled side by side. The resistance of bundled wire is alpha R, beta R by 3, Charlie R by 9 and delta 9R. Dear students, when wire is cut into 3 equal parts, then resistance of each part is R by 3, and when they are connected side by side, it means they are connected in parallel, then equivalent resistance is equal to R part over N, R by 3 over N, which equals R over 9. So Charlie option is true. Question number 2. A capacitor is charged with a battery and energy stored is U. After disconnecting the battery, another capacitor of same capacity is connected in parallel to the first capacitor. Then total energy stored in the two capacitors is alpha U by 2, beta U by 4, Charlie 4U, delta 2U. Initially energy stored by single capacitor is, let its U1 equals half CV square, and after connecting अनचार्ज सिमिलर कैपेसिटर के एक और सिमिलर कैपेसिटर है लेकिन वो अनचार्ज है, उसका पोटेंशियल 0 है, तो उसको जब उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे तो अब जो दोनों के क्रॉस नेट वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2. अब जो इनिशियल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस C है, उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो V है, लेकिन जो दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट किया था उस पर इनिशियली कोई वोल्टेज नहीं है और ना ही कोई चार्ज है इनिशियली, सो उसके लिए V2 की टर्म 0 हो जाएगी. सो इट विल बिकम CV ओवर 2C, C cancels out with 1 over C, it becomes V by 2. Now energy stored U1 prime on any capacitor is 1 over 2 CV prime square. उन दोनों में से किसी एक कैपेसिटर पे भी जो एनर्जी स्टोर है वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे, क्योंकि नेट वोल्टेज अब हमारे पास कितना आ गया V by 2, V by 2 एक कैपेसिटर के क्रॉस और V by 2 दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस. तो इधर V प्राइम के बजाय V by 2 पुट कर देंगे, इट विल बिकम 1 by 2, और ये क्योंकि V by 2 का स्क्वायर है तो 1 by 2 उसका 1 by 4 हो जाएगा. 1 by 4 को स्टार्ट में लेंगे, बाकी 1 over 2 CV स्क्वायर ब्रैकेट में. सो 1 over 2 CV स्क्वायर किसके बराबर? U1 के, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. सो इट बिकम्स U1 by 4. अब ये जो U1 by 4 यानी 1/4 ऑफ द इनिशियल एनर्जी ये एक कैपेसिटर पे आई है. इधर तो दो कैपेसिटर हैं तो दोनों की मिला के टोटल क्या होगी? 2 into U1 by 4, it becomes U1 by 2, that is half of the initial total energy. So alpha option is true. Question number 3. How much potential drop exists across a closed switch? Alpha 0 volt, beta 1 volt, Charlie 2 volt, delta 3 volt. Dear students, for closed switch resistance equals 0 and V is equal to IR. Since R is equal to 0, so V also equals 0. Alpha option 0 volt. Question number 4. A capacitor of capacitance C has a charge Q and stored energy is W. If the charge is increased to 2Q, the stored energy will be alpha 2W, beta 4W, Charlie W by 4, delta W by 2. Stored energy is equal to W. In terms of charge and capacitance, energy stored is Q square over 2C. इसके अलावा भी एनर्जी स्टोर्स के 3 हमारे पास फॉर्मूला हैं, लेकिन हमने इधर वो यूज़ करना है जिसमें चार्ज है. सो अगर हम चार्ज को डबल कर दें तो इधर Q की जगह 2Q आ जाएगा और U की जगह U प्राइम न्यू एनर्जी
So it will become 4 q square or 2c. ये जो q square over 2c है that is equal to w. So it becomes 4w, that is energy increases by 4 times. It becomes quadrupled. Beta option is true. Question number 5. Velocity selector will select only those charged particles whose velocity is given by alpha v equals e by b, beta v equals b by e, Charlie v equals e into 8, डेल्टा v equals 0. डियर स्टूडेंट्स, ये MCQ 2023 के टेस्ट में भी आया था. वेलोसिटी सिलेक्टर का फॉर्मूला है v equals e over b. वेलोसिटी सिलेक्टर में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उसमें से सिर्फ वही पार्टिकल्स पास करेंगे जिनकी वेलोसिटी e by b के इक्वल होगी. अल्फा ऑप्शन इज ट्रू. Question number 6. If an object with a charge of -2 millicoulomb experiences a force of -8 Newton in an electric field, what is the strength of the electric field? Alpha 2000 Newton per coulomb, beta 4000 Newton per coulomb, Charlie 8000 Newton per coulomb, delta 1600 Newton per coulomb. It's a very simple and straightforward formula. E equals f over q minus 8 over minus 2 into 10 power minus 3. So 2 by 8 becomes 4. So 4 into 10 power minus 3 ऊपर ले जाएं 10 power plus 3. So 4 into 10 power 3 becomes 4000 Newton per coulomb. Beta option is true. Question number 7. How does the electric field strength between opposite charges change if the magnitude of the charges increase? Alpha, electric field strength increases, beta, electric field strength decreases, Charlie, electric field strength remains constant, delta, electric field strength becomes 0. Dear students, electric field strength increases if we increase the amount of charge. So its correct option is alpha. Question number 8. Why does a positive charge move towards a region of lower electric potential alpha to gain energy, beta to decrease its potential energy, Charlie to increase its potential energy, delta to oppose the electric field? Dear students, positive charge moves in the direction of decreasing potential and decreasing potential energy. So to decrease its potential energy is the correct option. Beta option is true. Question number 9. If the resistance in a circuit is doubled while keeping the voltage constant, how does it affect the current? Alpha, current decreases by half, beta, current doubles, Charlie, current remains constant, delta, current becomes 0. According to Ohm's law, current is inversely proportional to resistance. So if resistance is doubled, then current becomes 1/2. So alpha option is true. Question number 10. The power consumed by a device with a resistance of 10 ohms when connected to a 120 volt source is alpha 12 watt, beta 144 watt, Charlie 1440 watt, delta 1200 watt. Dear students, power consumed can be found by this formula V square over R, 120 into 120 over 10, like 10 cancel out हो गया, and 12 into 0 0, 12 into 12 144, it becomes 1440 watt. Charlie option is true. Question number 11. The magnetic flux through a surface is 4 Weber. If the area of the surface is halved, what is the new magnetic flux? Flux equals BA cos theta. So flux is directly proportional to area. If area becomes half, then magnetic flux would become half. Since initially it is 4 Weber, then half of 4 Weber is 2 Weber. So alpha option is correct. Question number 12.
In a solenoid, how does the direction of the magnetic field change when the direction of current through the coil is reversed? Alpha, the magnetic field remains unchanged. Beta, the magnetic field reverses direction. Charlie, the magnetic field becomes zero. Delta, the magnetic field starts rotating. Dear students, जब हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. सो रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट would reverse the direction of magnetic field. So beta option is true. Question number 13. An electron with a charge of minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb moves at a velocity of 5 into 10 raised to power 5 meter per second, making an angle of 60 degree to a magnetic field of 0.8 Tesla. What is the magnetic force on the electron? Alpha 8 into 10 raised to power minus 14 Newton, beta 4 into 10 power minus 14 Newton, Charlie 5.5 into 10 power minus 14 Newton, delta 1.9 into 10 power minus 14 Newton. Force on a charged particle in magnetic field is F equals Q VB sin theta. So here instead of Q we'll put E, charge of electron, so it becomes E VB sin theta, but theta is 60. So E की value है 1.6 into 10 power minus 19 into 5 into 10 power 5 is the value of speed. B is 0.8 into sin 60 is 0.866. अब हम ऐसा करते हैं कि 1.6 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं into 10 पावर 10 की दोनों पार्ट्स मल्टीप्लाई होंगी तो ऐड होंगी पार्ट्स माइनस 15 माइनस 19 प्लस 5 एंड 0.8 इंटू, इसको मैं आसानी के लिए राउंड ऑफ कर लेता हूँ 0.9. अब अगर आप पॉइंट को भूल जाएं थोड़ी देर तो 5 इंटू 16 करें तो वो बनता है 80. अब क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए, तो ये बन जाएगा 8 इंटू 10 पावर माइनस 14 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. 9 8 72 होता है. 72 पहले लिखें, फिर इधर देखें कि पॉइंट्स के बाद टोटल 2 डिजिट्स हैं, एक इधर तो पॉइंट इधर लगा दें हम. अब ये बन जाएगा, इसको मैं 0.7 लिख देता हूँ. 0.7 इंटू 8 इंटू 10 पावर माइनस 14. नाउ 8 7 56 लिख के बाद में आप पॉइंट लगाएं, एक डिजिट इधर पॉइंट के बाद तो इधर भी एक होना चाहिए. सो इट बिकम्स 5.6 इंटू 10 पावर माइनस 14. The closest option is Charlie 5.5 into 10 power minus 14 Newton. Question number 14. If a circuit has a resistance of 18 ohms connected in series with another resistance of 6 ohms across a battery with a voltage of 36 volt, what is the potential difference across the 18 ohm resistor? Alpha 9 volt, beta 18 volt, Charlie 24 volt, डेल्टा 27 वोल्ट. डियर स्टूडेंट्स, दोनों रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं. जब सीरीज में तो दे फॉर्म अ पोटेंशियल डिवाइडर. सो विद द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिवाइडर वी कैन इजीली फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 18 ओहम रजिस्टर. सो दे आर फॉर्मिंग अ पोटेंशियल डिवाइडर और टोटल पोटेंशियल अक्रॉस देम इज 36 वोल्ट. सो पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्मूले के मुताबिक मैं अगर इसको R1 कह दूं और इसको R2 तो V1 equals R1 over R1 plus R2 into V. So into V. So V1 equals 18 over 24 into 36. So it becomes 2 12s 24, 3 12s 36 and 2 9s 18. So 9 3s 27 volt is the correct option. So correct option is delta 27 volt. Question number 15. An electron enters into a uniform magnetic field with components of velocity parallel and normal to the field direction. The path of the electron is alpha helix, beta circle, Charlie parabola, delta straight line. Dear students, when theta is less than 90 or greater than 0, the velocity has two components Vx and Vy. जब x component होता है
तो वो लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है स्ट्रेट लाइन में, और अगर y कंपोनेंट हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है और वो सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है। इधर दोनों कंपोनेंट्स हैं x और y, तो एक सर्कुलर पाथ में मूव कराने की कोशिश करेगा, एक लीनियर मोशन करवाने की कोशिश करेगा, दोनों की सुपरपोजिशन से एक हेलिक्स मोशन, एक स्प्रिंग लाइक मोशन बनेगी। सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। For question number 16, let us move to the next board. Question number 16. Which one of the following statement is true? Alpha electrostatic force obeys inverse square law while gravitational force does not. Dear students, ये wrong है statement क्योंकि gravitational force भी inverse square law को follow करती है। Beta, both gravitational force and electrostatic force are repulsive in nature. Dear students, gravitational force is only attractive and electrostatic force is attractive as well as repulsive. So ये बीटा भी true नहीं है। अगर डेल्टा ऑप्शन को मैं पहले देखूं तो both electrostatic force and gravitational force don't obey inverse square law, ये भी wrong है क्योंकि दोनों inverse square law को follow करती हैं। Charlie, gravitational force is much weaker than electrostatic force. This is true. Now why this is true? Since gravitational constant is 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kilogram square and Coulomb's constant is 9 into 10 power 9 Newton meter square per coulomb square. Since G is much smaller than K, so that's why gravitational force is much smaller than Coulomb's force. So Charlie option is true. Question number 17. According to maximum power transfer theorem, which of the following is the maximum power delivered by the battery to the output? Alpha E square by 4R, beta E square over 2R, Charlie E square over 5R, delta E square over 3R. Dear students, when we make load resistance equal to the internal resistance of the battery, then battery gives maximum output power which is equal to E square over 4R. So alpha option is true. Question number 18. Why does a charged balloon sticks to a neutral wall? Alpha, the wall gains charge. Beta, the balloon loses charge. Charlie, induction induces a charge separation. Delta, static friction generates चार्ज। तो स्टूडेंट्स ये वॉल है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरह अरेंज होंगे कि उनके पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव एक दूसरे को एक के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। लेकिन जब हम एक चार्ज बैलून, सपोज नेगेटिवली चार्ज बैलून को पास लाते हैं तो इसमें पोलराइजेशन का इफेक्ट होगा। उसमें उसके मॉलिक्यूल्स इस तरह अरेंज हो जाएंगे कि पॉजिटिव बिकम्स नियर टू दिस नेगेटिव बैलून एंड नेगेटिव मूव्स अवे फ्रॉम इट। सो अब वो पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और बैलून इसके करीब जाएगा। सो दिस इज ड्यू टू इंडक्शन विच इंड्यूसेस अ चार्ज सेपरेशन। सो चार्ली ऑप्शन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19. What is the force between two charges if the distance between them is doubled while keeping the charges constant? Alpha force is halved, beta force is doubled, Charlie force remains constant, delta force is quartered. F is inversely proportional to R square. Coulomb's force follows inverse square law. So if we make it R इक्वल टू 2R के डिस्टेंस को डबल कर दें तो जो न्यू फोर्स होगी F प्राइम दैट विल बी F बाय 4, बिकॉज इधर 2R करें तो 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर होता है तो नीचे 4 आ जाएगा। सो फोर्स इज क्वार्टर्ड, डेल्टा ऑप्शन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20. If the electric potential at a point A is 20 volt and at a point B is 10 volt, what is the electric potential difference between A and B? It is very straightforward question. Delta V equals VA minus VB. 20 minus 10 equals 10 volt. Alpha option is true. Question number 21.
How does addition of resistors in series affect the total resistance? Alpha, total resistance increases. Beta, total resistance decreases. Charlie, total resistance remains constant. Delta, total resistance becomes zero. डियर स्टूडेंट्स, जब सीरीज में हम ऐड करते हैं रेजिस्टर्स को, तो सीरीज में जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. सो इससे टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी. सो अल्फा ऑप्शन इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 22. What is the relationship between resistance and thickness of a wire? Alpha, inversely proportional. Beta, directly proportional. Charlie, no relationship. Delta, exponentially related. Resistance of a wire is inversely proportional to cross-sectional area, or you can say inversely proportional to the square of diameter, or inversely proportional to square of radius. अब इन चीज़ों पे ही thickness depend करती है. It means inversely proportional to thickness. Alpha option is true. Question number 23. How is the direction of the magnetic field inside a solenoid determined? Alpha, by the core material. Beta, by the right hand rule. Charlie, by the number of turns. Delta, by Ampere's law. Inside the solenoid जो direction of field है, we find it by using right hand grip rule. हम सॉलिनाइड को राइट हैंड में इस तरह ग्रिप करेंगे कि फिंगर्स की कर्ल होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो जो थंब है वो शो करेगा नॉर्थ पोल. जिस साइड पे नॉर्थ पोल होगा तो उसके ऑपोजिट साइड पे साउथ पोल होगा. अब बाहर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, लेकिन इन साइड इट विल बी फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ. सो बाय राइट हैंड रूल बीटा ऑप्शन इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 24. What happens to the magnetic force on a charged particle if its velocity becomes parallel to the magnetic field? Alpha, force becomes maximum. Beta, force becomes zero. Charlie, force remains constant. Delta, force decreases. When theta equals 0, because velocity of charged particle is parallel to the magnetic field, so sin theta becomes 0. Because sin 0 is 0, so force on the charged particle q Vb sin theta becomes 0. So beta option is true. Question number 25. The magnetic field inside the current carrying wire varies. Alpha, inversely with R. Beta, inversely with R square. Charlie, directly with R square. Delta, directly with R. Dear students, inside of the wire मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड करना हो तो उसका ये फॉर्मूला है म्यू नॉट आई आर ओवर 2 पाई आर स्क्वायर. नाउ दिस कैपिटल आर जिसका स्क्वायर है ये तो रेडियस ऑफ द वायर है, ये फिक्स रहेगा. जो ये आर है ये होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, यानी वायर के अंदर जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस. अब सपोज ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, ये इसका फिक्स रेडियस आर है और ये आर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. सो बी इनसाइड द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड द वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है. इसका मतलब जो सेंटर पे 0 होगा, सेंटर से अवे मूव करेंगे इंक्रीज होगा, बिल्कुल एजेस पे जाके मैक्सिमम होगा. सो डेल्टा ऑप्शन डायरेक्टली विद आर. डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया अभी स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के MDCAT के लिए जो MCQs थे. उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे. इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज़.